Hello friends, welcome to Creator Plus. Let's see today's market performance. As you can see, Nifty 50 closing at 18,691.20 with plus 25.70 in number and 0.14 in percentage. And you can see the direction, one day direction, how work today. This is not stable in any direction. This is volatile. And at the end here, if you look at overall performance, then you can see open at 18,682.35 and previous close 18,665.50. ओपन हुआ है कुछ प्लस में, देन लो 18,646.70 पे गया, हाई 18,722.05 टुडेज हाई। और 52 वीक का अगर देखें हाई और लो, तो आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ लो है 15,300 15,367.50 and high 18,887.60. If we look at gainers and losers group, then you can see in 50, 35 under advancers and 14 under decliners, and in 35, 30 under 0 to 2% range and 5 under 2 to 5% range, and 1 at neutral position, and all 14 decliners under minus 2 to 0% range. If we look at stock wise, then you can see in gainers list Cipla at the first position with plus 3.28%, then Adani Enterprises 2.78, Hero MotoCorp 2.70, Tata Consumer Products 2.58, Davis Laboratory 2.06, UPL 1.85, Mahindra and Mahindra 1.78, Maruti Suzuki India 1.53, Hindalco Industry 1.52, Tata Motors 1.47, Adani Ports 1.41, Titan 1.14 and Ultratech Cement 1.08%। ये सभी 1% और उससे ज्यादा की बढ़त वाले हैं। बाकी इससे कम वाले में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टॉक हैं इसमें। रेडिस लेबोरेटरी, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री, ग्रासिम इंडस्ट्री, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, कुछ इस तरह के स्टॉक 1% से नीचे वाले में है। और सबसे एंड में बजाज फाइनेंस विद प्लस 0.13%। इफ यू लुक एट लूजर्स लिस्ट, then you can see here NTPC at the first position with a minus 0.96%। it means एक भी ऐसे नहीं है जो कि 1% को भी टच करता हो। all below 1% in negative, and Tata Consultancy Services at the second position with minus 0.83, and if we look at an HDFC minus 0.10%, and if we look at others, what is the listing here, that is Coal India, Power Grid, Reliance Industry, LT Large and Turbo, HDFC Bank, Bharat Petroleum, Bajaj Auto, Bharti Airtel, Tech Mahindra, Kotak Bank and Apollo Hospitals, all these in losers list. If we look at technical chart of Nifty 50, then you can see intraday chart 5 minutes candle how appeared today. Actually this 9:30 starting here, and you can see in the morning, yeah, starting in negative, no, here starting here actually in positive and then goes negative direction, and all day you can see below cloud, and at the last movement you can see is going toward upside, and its chances to be up in uh, tomorrow morning. Yeah, this is Nifty 50. If we look at BSE Sensex, then you can see closing at 62,970 with minus 9.37 number and 0.01 in percentage. You can see the direction. Overall, same as Nifty 50, volatile all the day, but Nifty closing in plus and this is in a minus. If we look at overall performance, then you can see opening at 62,946.50, previous close 62,979.37, तो ये इस वैल्यू से कम है। जो ओपन हुआ है वो 62
7979 और ये 946 and low 62,853.67 and high 63,136.09. If we look at gainers and losers group, then you can see in 30, 20 under advancers and 10 under decliners, and all 20 under 0 to 2% range and all 10 under minus 2 to 0% range. And if we look at it stock wise, Maruti Suzuki India plus 1.67, then Tata Motors 1.54, Titan 1.14. Only these three above 1% in gainers list, and others below 1% you can see in this list. Bajaj Finance at the end with plus 0.03 percentage. If you look at losers list, then you can see Tata Consultancy Services at the first position with minus 0.86%. Here again, none above 1 or touching 1%, all below 1%, and again a Reliance Industry at the second position, then NTPC, Bharti Airtel, Power Grid, LT, HDFC, Kotak Bank, Tech Mahindra, and HDFC. All those we have already seen in Nifty 50 list. And if we look at technical chart of BSE Sensex, then you can see how work today starting here and goes whole day work below cloud, and for a moment as we seen in Nifty 50 it goes upside but didn't close in a green, unfortunately closing in red, and as we seen Nifty 50 closing in green. This is the difference between both Nifty 50 and BSE Sensex. But yes, it's showing indicating that this will go upside, and RSI at 53,2080 range and chances to go upside tomorrow. This is BSE Sensex. If we look at other markets, then market indexes NSE change. You can see in NSE list Nifty Pharma at the first position with plus 1.53%, then Nifty, then India VIX. India VIX भी आज plus में है, plus 1.42%, and Nifty Auto 1.15, Nifty Mid Cap 150, Quality 50 1.05. All these above 1%. तो एक तो इंडिया विक्स है ये प्लस में है और मार्केट नेगेटिव में है एक तरह से समझे तो, एंड अदर्स आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी प्लस में है, ग्रीन में है, और ग्रीन में सबसे एंड में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.03%, ओनली टू इन रेड, एंड दैट इज निफ्टी पीएसयू बैंक माइनस 0.18, देन निफ्टी स्मॉल कैप 250 minus 0.37%. And if we look at BSC list, then you can see here in BSC indexes, BSC Healthcare again at the first position with 1.45%, mid cap select 1.25, mid cap 1.04, and auto 1.04. All these above 1%, and others below 1%, and again majority in green, only three in red, and that is Sensex, Bharat 2020, and Energy. All the is below 1%. You can see Sensex is minus 0.01%. This is and then minus 0.02, then minus 0.16, and in green lowest is a BSE Bank X plus 0.01 percentage. This is all the indexes here, and now we are going to discuss one from NSE list, and as here we can see Nifty Pharma at the first position with plus 1.53 percentage, and in number 202.30, closing है 13,388.60 पे, and you can see the direction. This is a bullish direction, and ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपन हुआ है 13,193.70 पे, प्रीवियस क्लोज 13,186.30, लो 13,176.20, एंड हाई 13,406. If we look at gainers and losers group, then you can see in 20 all under advancers, and 13 under 0 to 2% range, and 7 under 2 to 5% range. And if we look at stock wise,
then you can see actually all under gainers, and therefore here all the stock listed under this category. Nifty Pharma and Gland Pharma at the first position with plus 4.18%, then Cipla 3.28, Laurus Labs 3.22, Netco Pharma 3.18, Aurobindo Pharma 3.18, Davis Laboratory 2.06, Sanofi India 2.03, Glenmark's Pharmaceuticals 1.96, Lupin 1.84, IPCA Laboratory 1.83, and Alchem Laboratories 1.54, and Granules India 1.48, Bicon 1.29, GlaxoSmithKline Pharma 1.11। ये सभी अच्छी लिस्ट है बढ़त वालों की, जो कि 1% से ज्यादा में। बाकी सभी आप देख सकते हैं, इसमें भी अच्छी बढ़त है 1% से कम वाले में। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जायडस लाइफ, एबॉट एंड सन फार्मास्यूटिकल, फाइजर्स एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल सबसे एंड में 0.25%। आज फार्मा के सेक्टर में बढ़त देख सकते हैं आप, अच्छी बढ़त है। And now we are going to discuss one from BSc list, and in BSc again healthcare at the first position, but we have already discussed in Nifty, therefore here mid cap, select BSc mid cap, select closing at 10,476.31 with 128.93 in number and 1.25 in percentage. You can see the direction, this is bullish direction. And if we look at overall performance, then you can see open at 10,328.11 and previous close 10,347.38. Today's low 10,321.38 and high 10,487.45. If you look at gainers and losers group, then you can see in 30, 24 under advancers and 6 under decliners, and in 24, 18 under 0 to 2% range and 5 under 2 to 5% range and 1 under 5 to 10% range। एक ऐसा भी जो कि 5 से 10% के रेंज में बढ़त में, तो और सभी डिक्लाइनर्स 6 के 6 -2 से 0% के रेंज में है। अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं गेनर्स की लिस्ट में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट फर्स्ट पोजीशन पे है प्लस 4.38%, देन वरुण बेवरेज 4.28, अडानी पावर 3.40, लॉरस लैब 3.10, कोलगेट पाल्मोलिव 2.25, पेस्ट सिस्टम्स persistent system 2.09, Bajaj holding and investments 1.74, अशोक लेलैंड 1.67। अच्छी बढ़त है आप देख सकते हैं, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, जुबिलैंड फूडवर्क, ट्रेंट, इन सभी में अच्छी बढ़त है। और 1% से ज्यादा वाले में आप देखते हैं वोल्टास है सबसे एंड में 1.11%, अदर्स बिलो 1%। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल सबसे एंड में है प्लस 0.05% के साथ। यह है कि गेनर्स की लिस्ट। इफ यू लुक एट लूजर्स लिस्ट, देन यू कैन सी इन दिस लिस्ट TVS Motor at the first position with minus 0.90%, then Emphasis minus 0.82. It means none above 1% or touching into 1%. Yeah, and others Coleman Dallam Investments, Federal Bank, Crampton Grapes Consumer Elects, and Max Financial Services at the end with minus 0.12%. This is BSc Mid Cap Select today's performance. And if we look at all top gainers and top losers in all move, एक बार चेंज पे क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं गायत्री रब एंड कैम 20% के साथ है पहले नंबर, देन यूनी वास्तु इंडिया 19.74, इल्डेको HSG एंड IND लिमिटेड 19.57, रत्न इंडिया पावर 19.15। कुछ इस तरह के स्टॉक हैं जो कि मैक्सिमम बढ़त के साथ हैं। और इस लिस्ट में सबसे एंड में देख सकते हैं आप
एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड है, यह 8.13% के साथ इस लिस्ट में सबसे एंड में यही है। एंड अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो टॉप लूजर्स एंड ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड, एंड एक बार चेक चेंज पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन सी ए जे आर इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड 33.33% की गिरावट है। देन सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड 22.22, सेतु बंधन इंफ्रा 10.53, यूरो फ्रेश फूड्स 9.86। ये मैक्सिमम गिरावट वाले स्टॉक और इस लिस्ट में सबसे एंड में एडलैब्स इंटरटेनमेंट है, 5.13% की गिरावट है इसमें। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें सिटी सीमेंट, कुछ इस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं, एच ओ बी सर्विसेज, इरोस इंटरनेशनल मीडिया, कुछ इस तरह के लिस्टेड है। तो ओवरऑल ये है आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।